जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव हे जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा से गुरु बंध मोए सावधान माते बंध मोए सावधान माते बंध मोए जहाँ प्रसादे भार ए भाव तरियो जा जहाँ प्रसादे भार ए भाव तरिया जा जहाँ कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया क्या हरण कर हमने
Asarana Sri Guru Charane Rate Aise Uttama Gati Sri Guru Sri Guru Charane Rate Aise Uttama Gati Jai Prasade Pure Sarva Asa Jai Prasade Jai Prasade Pure Sarva Asa Jai Prasade चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ रचरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया प्रभुपाद करो दया देहो मोरे पद छाया एवे जस घुसुक त्रिभुवना शिला प्रभुपाद पतित पावना जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमः ओम नमस्ते सरस्वती देवे
Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desa Tarine Namaste Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna कितने बजे तक करना श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Gaura Hare. Gaura 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 Hare, Jaya Sachinandana, Gaura Hare. Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Gaura Hare. Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Gaura Hare. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Radhika Raman, Jaya Radha, Radhika Raman, Radha Radhika Raman,
जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा बलदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेशकाचार्य अष्टो सतनीतला प्रवेश ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ISKCON फाउंडर वेबिटी फाउंडर हिज डिवाइन के श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेशकाचार्य अष्टो सतनीतला प्रवेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णवविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की। श्री गौर राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। सुदर्शन चक्र जी महाराज की। कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री राधा राधिका रमन भगवान की। श्री कृष्ण बलराम भगवान की। पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री गुरु महाराज की। अनंत कोटि वैष्णवविंद की। ऑल गोइज टू assembled devotees, all goes to assembled devotee, all glory Sri Guru Sri Gauranga Srila Prabhupada की जय। कृपया करके हमारे साथ गुरु वंदना दोहराइए। हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जी भौतिक कलुषों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले शुद्ध द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूँ। उनके चरण कमले में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वह मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान बढ़ते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं, मेरे में भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे श्रील प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव कृपा कर मुझे दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैलाओ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
Jayarada Madal give your introduction also. After Jayarada Madal give your introduction. Out of date, your introduction's out of date. Is it out of date? Is this a written introduction? This is the latest aspirant. No, it's out of date. His own name Govind Ghosh appearance. Disappearance. Govind Ghosh disappearance. What are we supposed to do? क्या करना है? Just a reminder. हरे कृष्णा। प्रभु जी लोग थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं, काफ़ी स्थान है, थोड़ा और आप इधर आगे आगे आ जाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा विशेष सौभाग्य हमें संग प्राप्त हो रहा है प्रभुपाद जी के शिष्य हिज होलिनेस जनानंद गोस्वामी महाराज का। तो महाराज का संक्षिप्त परिचय। महाराज का यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जन्म हुआ था और 1972 में प्रभुपाद जी शिक्षा प्राप्त की थी। महाराज ने दीक्षा प्राप्त की थी श्रील प्रभुपाद जी से। और यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, मलेशिया, यूरोप, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और पूरे विश्व में महाराज भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। मुख्यतः महाराज फ्रांस में बेस्ड हैं। महाराज के कीर्तन, हरिनाम और उनके स्किट्स, उनके अनुभव भक्तों को बहुत प्रभावित करते हैं और अनेक बद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पर लेके आए हैं। महाराज जो है फ्रांस के नेशनल एडवाइज़र हैं और आज 40 साल के बाद जो है फ्रांस दोबारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स में टॉप कर रहा है और भागवतम जो है फ्रेंच लैंग्वेज में प्रिंटेड हुई है। इस उम्र में भी महाराज जो हैं स्वयं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। तो हमारा सबके लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज का लेट्स वेलकम महाराज बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलॉन्ग विद महाराज वी वेलकम महानंद प्रभु, मायापुर चंद्र प्रभु, एकनाथ प्रभु, रूप रघुनाथ प्रभु एंड प्रिया रानी माता जी। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं अमृतसर से आए इसके श्यामानंद प्रभु और राधा गोविंद प्रभु का भी। तो आप सब भक्तों से निवेदन है एक अपने अपने मोबाइल फ़ोन चेक कर लीजिए कि कथा में किसी प्रकार की बाधा ना हो, साइलेंट पे स्विच ऑफ मोड में हो। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनबालाभा गिरिवरधारी
Gopi Janabalabha Girivardhari Yashodanandana Prachachanaranjana Yashodanandana Prachachanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Panachari Yamunatira Vanachari Jayarada Madhava Kunjabihari Jayarada Madhava Kunjabihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanandi, Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaurnitai ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha, what's that? Shri Shri Radha Radhika Raman ki jai, Shri Punjabi Bagh Dham ki, Gantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Harinam Sankirtan ki, Brihat Madanga ki, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Nam Om Vishnu Padaya, Krishna Vastaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namani, Namaste Saraswate Devi, Gauravani Prachardine, Nirvasesha Sanyavari Pastacharde Shatarine. We have a Hindi translation, correct? We have a Russian translation or not needed? Is it necessary? You speak English? All speak English, Rupa? They all speak English? Yes? If you need it, do it. Hare Krishna, so thank you for inviting us. We're happy to be back in Punjabi Bagh. हरे कृष्णा, आपका धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए. हम बहुत प्रसन्न हैं पंजाबी बाग में पुनः आकर. And unfortunately we can only stay a little while. We're passing through on our way back to France. हम बस यहाँ कुछ समय के लिए और हैं, उसके बाद हम फ्रांस वापस जा रहे हैं. But you're very special here. How many books did you distribute during the Prabhupada Book Marathon? तो यहाँ पे आपने भगवद गीता मैराथन में कितनी पुस्तकें वितरित की? 3 lakhs. 300,000 plus Bhagavad Gitas during the Prabhupada Book Marathon. 3 लाख भगवद गीता मैराथन. They did more than we did in Paris. आपने पेरिस से ज़्यादा पुस्तकें वितरित की हैं. We have a very small time there. You're doing wonderful. Keep up the book distribution. It's the foundation of our movement. पुस्तक वितरण को आगे बढ़ाते रहे, ये हमारे आंदोलन की नींव है. Everything's in the books. सब कुछ पुस्तकों में है. We take our guidance for our spiritual practices from the books. हम अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए पुस्तकों से मार्गदर्शन लेते हैं. We get inspiration by hearing from Prabhupada's books. हम प्रेरणा लेते हैं इन पुस्तकों को पढ़ के श्रील And we प्रभुपाद. spread Krishna consciousness by distributing Prabhupada's books. हम प्रचार करते हैं इन पुस्तकों का वितरण करके. Creates all auspiciousness. Creates all auspiciousness in the world. ये पूरे विश्व में मंगलकारी है. Bhakti Siddhanta Maharaj called this book distribution the Brihat Mridanga. Huh? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि पुस्तक वितरण बृहद मृदंग है. And sometimes he would have the printing press for printing the books. He'd have it in the temple room itself. कभी-कभी वो प्रिंटिंग प्रेस मंदिर के प्रांगण में ही बना देते थे. Deities at one end, printing press at the back. एक तरफ विग्रह और दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस, किताबें छापने की मशीन. Right in front of the deities, the printing press would be printing these old style letterpress printing. You don't know what that is, letterpress.
विग्रहों के ठीक सामने प्रिंटिंग प्रेस ऐसे शोर करती रहती थी और पुस्तकों का प्रकाशन करने में लगी रहती थी। जैसे पुराने प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस होती थी वैसे शोर किया करती थी। Arti one end, printing at the other. Arti. एक तरफ आरती चल रही है और दूसरी तरफ प्रकाशन चल रहा है। So he very much emphasized the importance, which is of course very novel because previously there was hardly any books. उन्होंने इस पे बहुत बल दिया और एक नया प्रकार का विचार था क्योंकि इससे पहले पुस्तकें बहुत कम हुआ करती थी। And our Prabhupada said he learned this from his Guru Maharaj. He learned most of his devotional practices from his father actually, but from his Guru Maharaj particularly he learned about books and printing books. श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उन्होंने भक्ति के बारे में अपने पिताजी से बहुत सीखा, परंतु विशेषतः पुस्तक प्रकाशन और वितरण के बारे में उन्होंने अपने गुरु महाराज से सीखा। After all, our goal is to please Krishna, so this is how you can please Krishna, by distributing his books. अंततः हमारा प्रयोजन है कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण को आप ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं पुस्तकों का वितरण करके। As you know, Prabhupada said these are not my books, these are Krishna's books. Krishna wrote these books. जैसा कि आप जानते हैं प्रभुपाद कहते थे कि ये मेरी पुस्तकें नहीं है, ये कृष्ण की पुस्तकें हैं, ये कृष्ण ने स्वयं लिखी हैं। So you're giving not only ourselves, we're getting the chance to associate with Krishna, but you're giving that chance to all the people to associate with Krishna. तो ये सिर्फ हमारे लाभ के लिए नहीं है, हमें कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है और लोगों को हम कृष्ण का संग प्रदान कर पा रहे हैं। So we're reading today from Bhagavatam. What verse number? 61. तो आज हम श्रीमद् भागवतम से पाठ कर रहे हैं 10वें स्कंद 47वां अध्याय 61वां श्लोक। The Song of the Bee. भ्रमर गीत। And it's Canto 10, 10वें स्कंद, Chapter 47, text number 61. 47वां अध्याय 61वां श्लोक। It's a long verse. लंबा श्लोक है। This is an amazing section of the Bhagavatam. ये भागवतम का बहुत अद्भुत पाठ है। And Uddhava is visiting Vrindavan. उद्धव वृंदावन गए हैं And he's seeing the incredible devotion of the devotees of Vrindavan. और वो देख रहे हैं ब्रजवासियों की अद्भुत भक्ति को। And where are we here? He's with the gopis and their devotion. तो वे गोपियों की अद्भुत भक्ति को देख रहे हैं यहाँ I पर। can't see the book. Speak from the heart. Speak from the heart. कह रहे हृदय से बोलिए, हृदय से बोलिए। This is not from the nose. So you're reading text number 61. तो हम 61वां श्लोक का पाठ कर रहे हैं। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Is it up there? I'll try to read it through. I'll meter, we'll see. Asangho charanarenu jashammaham sham. Vrindavane kim api golma lotosha danyam. Yadushkajam svajanam ayapatam chahidva. Pejo mamakunda paviving shutibir bimigyam. Asammaho charanarenu jishamahang shyam.
Vrindavane kimapi kumalotoshadinam Yadyushjajang svajanam aryapatang chahitva Bejor makunda padaving shutibir vimkyam Asammaho charana renu jushamahang syam Vrindavane kimapi gulma lotoshadinam Yadyushjajang sajanamarya patang chahitva Bejor makunda padaving shutibir vimkyam Hasammaha charanarena jushamahang syam Vrindavane kimapi goma latoshadinam Yadushjajang sajanamarya pating chahitva Bejor makunda padaving shutibir vimigyam Asang aho charanarena jushamahang syam Shidam sajanamaha bhutim hitva Bejava makunda padiving shutibir vimigyam Asamaho charanarenu jushamahang syam Vrindavane kimapi gulma latoshadinam Yadushjajang sajanamaya patang chahitva Bejor makunda padaving shutibir vimigyam Ladies, Asamaho charanarenu jushamahang syam Vrindavane kimapi goma latoshadinam Yadush Bejor makunda padaving vimigyam. Is the in Hindi or in English on the board? Huh? Both on the board there. Yeah. Asam. Hindi. गोपियों की Aho. ओह Oh. I know that word. Oh. I know a Hindi word. Oh. I learned a word today. Oh. Charanarenu. चरण कमलों की धूली Jushtim. अनुरक्त Sorry. Eyesight. Aham Syam. मैं बनूं Vrindavane. वृंदावन में Kimapi. कोई एक Romlata Oshadinam. झाड़ियों लताओं तथा वनौषधियों में से Ya. जो Duschajam. छोड़ पाना अतीव कठिन Svajanam. पारिवारिक सदस्यों को Ayapatam. सतीत्व मार्ग
cha तथा hitva त्याग कर bejuhu पूजा किया। mukunda padivim मुकुंद या कृष्ण के चरण कमलों की shrutibihi वेदों के द्वारा vimvigyam. खोजे जाने के लिए। Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. The gopis of Vrindavan have given up the association of their husbands, sons, and other family members who are very difficult to give up. And they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda, Krishna, which one should search for by Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan, because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अतीव कठिन होता है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतीत्व मार्ग का परित्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रौंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। Purport. The word meanings and translation for this verse are taken from Srila Prabhupada's English rendering of Chaitanya Charitamrita and Chalila 747. Sri Uddhava here shows the perfect Vaishnav attitude of humility. He does not pray to be equal to the gopis in their exalted stage of love, but rather to take birth as a bush or a creeper in Vrindavan, so that when they walk upon him, he will get the dust of their feet and thus be blessed. The shy gopis would never agree to give such blessings to a great personality like Uddhava. Therefore, he cleverly sought to get such mercy by taking birth as a plant in Vrindavan. इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 7वें अध्याय 47वें प्यार से लिए गए हैं। यहाँ पर श्री उद्धव एक पूर्ण वैष्णव की उदारता की मनोवृत्ति दिखलाते हैं। वे उच्च प्रेमावस्था में गोपियों की बराबरी करने की प्रार्थना नहीं करते, अपितु वृंदावन में एक झाड़ी या लता के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जिससे जब गोपियाँ उनके ऊपर से चलें तो वे उनकी चरण रज पाकर धन्य हो जाएं। लजीली गोपियाँ उद्धव जैसे महापुरुष को ऐसे आशीर्वाद देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। इसलिए उद्धव ने होशियारी से वृंदावन में एक पौधे के रूप में जन्म लेकर ऐसी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। So this is the song of Uddhava. तो ये उद्धव का गीत है। And where thought comes how this is related to our situation. तो ये कैसे हमारी परिस्थिति से संबंधित है। In the purport, तात्पर्य में a key word is mentioned here,
humility. एक मुख्य शब्द आया है विनम्रता. And in the presence of the gopis, Uddhava has realized what genuine humility means. गोपियों की उपस्थिति में उद्धव को यह साक्षात्कार हुआ है कि वास्तविक विनम्रता क्या होती है. This is also, we are hearing about Vrindavan, हम यहाँ वृंदावन के बारे में श्रवण कर रहे हैं. and the primary characteristic of Vrindavan is that everybody loves Krishna. तो मुख्य जो गुण है वृंदावन का वह ये है कि सब कृष्ण से प्रेम करते हैं. But there's another aspect which simultaneously we could say appears inseparably along with prema or love of Krishna. That's called dainya. और कृष्ण के प्रेम के साथ ही एक और गुण होता है जिसको कहते हैं दैन्य. Dainya is hard, we cannot really use an English equivalent, but it's utter. You know, this word utter is used for different reasons, but utter humility, that means complete, absolute humility. दैन्य का कोई अंग्रेजी भाषा में पर्यायवाची अच्छा नहीं है, परंतु उसको कहा जा सकता है बहुत ही गहरी और तीव्र विनम्रता. So he's saying, Uddhava is saying, it may not appear from a material perspective that what is this humility, utter humility. उद्धव यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से यहाँ पे ना दिखे कि ये तीव्र विनम्रता क्या होती है. Materially speaking, people may judge humility. What would you say is a material understanding of humility? भौतिक दृष्टि से हम विनम्रता को कैसे समझेंगे? आप विनम्रता को भौतिक दृष्टि से क्या कहेंगे? महाराज पूछ रहे हैं. Huh? Pardon? I'm asking you. महाराज पूछ रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से विनम्रता को क्या कहेंगे? What do people understand as being humble? लोग विनम्र होने से क्या समझते हैं? Huh? He's saying tolerant. It could be sometimes people equate the two words. They are similar and they're related. There's some differences. But sometimes people equate humility and tolerance as kind of like similar, synonymous almost. कभी-कभी लोग इन शब्द को पर्यायवाची की तरह मानते हैं. विनम्रता और सहनशीलता, इनमें कुछ सिमिलर चीज़ें भी हैं और कुछ अलग चीज़ें भी हैं. What else might they? I mean, that's not very deeply definitive, but it's related. Anything else? और कुछ? Huh? What did you say? Humility? Are you saying knowledge? No, a definition of humility. Let's try to stick with humility. विनम्रता की knowledge, परिभाषा. of course, can be related, but it's not generally a definition of humility. माता जी कह रही थी ज्ञान. महाराज कह रहे हैं ज्ञान संबंधित. Not heard that one. ज्ञान Some जरा संबंधित. definition. If somebody says you're a humble person, what do they mean? कोई अगर कहता है कि आप विनम्र व्यक्ति हैं तो उनका क्या तात्पर्य है इससे? I mean, you can say knowledge in the absolute sense, which Krishna says, what is knowledge, and humility is one of the items of knowledge, but it's not so much a definition of humility. Pardon? Not rigid. Well, yeah, maybe, but not necessarily. You can be a crazy, passionate fellow, and very egotistical, and not being rigid also. तो प्रभु जी ने कहा कि एक व्यक्ति जो बहुत सख्त नहीं है, तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है. Being flexible is not necessarily, it might be, but it might be, one of the aspects, but it might not be also. महाराज कह रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत राजसिक हो सकता है और फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सख्त ना हो. They don't have this word here in India, humble?
क्या क्या Someone already क्या mentioned भारत में ये tolerant. शब्द है नहीं विनम्रता नाम का? What else? और कुछ बताइए. Okay, that might be a little bit more in line with what people would say. You're very kind and speaking very sweetly to others. तो प्रभु जी ने कहा कि कोई जो बहुत उदार है और मीठे शब्दों का प्रयोग करता है, महाराज ने कहा हाँ, ये लोगों के विचारधारा से मैच कर सकता है. What else? You had your hand up. No. We're talking materially. कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहना, प्रभु जी ने कहा. महाराज ने कहा नहीं, हम भौतिक दृष्टि से पूछ रहे हैं. Materially speaking, that's a good one, isn't it? And that's more or less a spiritual one, but not complete. Not to be proud of one's achievements. Is that what you said? Yes. Not to be proud. Yeah, I think a lot of people would agree with that. Just one second, I will come to you in a second. A lot of people agree with that. Not to be proud of one's, or show off, you know. You're not a show off. You're not taking the credit, you could say. Prabhupada uses this definition. This is one material definition he uses. प्रभु जी ने कहा कि वह व्यक्ति जो अपनी उपलब्धियों से गर्वित ना हो उसको लोग विनम्र कहते हैं. महाराज ने कहा ये बहुत लोगों की धारणाओं से मैच करेगा और कि जो दिखावटी नहीं है. और प्रभुपाद ने भी ऐसी जगह पे एक जगह पे विनम्रता की ये परिभाषा दी. In the Prabhupada book marathon, who came top? Who was the top book distributor? तो भगवद गीता मैराथन में सबसे प्रथम कौन आया यहाँ पर? Who was the top book distributor? No, in your temple, who was the top? He's not here. He's out on book distribution or what? What happened? He left after distributing books? No, I hope not. They are attending the Rohini temple opening meeting. They are attending the meeting. Oh, there's a meeting for the opening of the Rohini temple. Okay. तो महाराज पूछ रहे हैं जो यहाँ पे प्रथम आए पुस्तक And वितरण what's में. his name? What's his name? What a good name, isn't it? Karuna Chandra. My goodness, he really is merciful. Huh? And you have two congregation devotees, Rasik Priya Prabhu and Krishna Bhav. Rasik Priya and Krishna Bhav. Beautiful names. No wonder they came top in the marathon. Names like that. So, you know, and number 3. Da 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 da. तो तीसरा किसका नंबर आया था मैराथन में? And you know, no, please, Prabhu, oh, no, I'm nobody, I'm a nobody, I'm nothing. तो ऐसे जब कहा जाता है तो वो व्यक्ति कहता है नहीं मैं I मैं did कुछ नहीं nothing. किया, मैं कोई नहीं हूँ. But sometimes in our heart we're feeling, परंतु हमें हृदय we're में बहुत trying अच्छा लग everything we रहा है. can not to show it. Huh? हाँ, तो मगर हम हमारे हृदय में बहुत अच्छा लग रहा होता है हमें, मगर हम ये दिखाना नहीं चाहते. And number 2 and number 1 and दूसरा नंबर किसका आया? पहला it's pretty hard not to be free of any desire for recognition. ये बहुत मुश्किल है कि हम प्रतिष्ठा की किसी भी इच्छा से मुक्त हों. There's another angle of this that people want. They want to be seen as a humble person. तो एक दृष्टिकोण ये भी है कि लोग जाना चाहते हैं कि मैं बहुत विनम्र व्यक्ति हूँ. That can also be a pride, isn't it? ये भी गर्व है. Everyone, you know, Prabhu, you're so humble. No. प्रभु आप कितने विनम्र हैं. नहीं. Everyone's praising you for being so humble. सब आपकी सराहना कर रहे हैं कि आप बहुत विनम्र हैं. It's really an ongoing kind of, what do we say, endeavor. And all this is, materially speaking, it's not really human. It's related, and it could be, but it's not possible to be truly humble in this world. तो एक तरीके से कहा जा सकता है इस जगत में विनम्र होना एक तरीके से संभव ही नहीं है, और ये हमेशा हमारा प्रयास चलता रहता है विनम्र बनने के. Because we're still seeing ourselves in the center. क्योंकि हम हमेशा अपने आप को केंद्र में देखते हैं. And you had, where's he gone? There he is. Someone had their hand up. What did you have? किसी ने यहाँ पे हाथ खड़ा किया था. उन्होंने क्या कहा था? Somebody had their hand up over there. Down to earth. Okay, that's another
you could say, interesting, some sort of statement on humility, down to earth. प्रभु जी कह रहे हैं जो बिल्कुल तल से जुड़ा हुआ हो, जो साधारण व्यक्ति हो। महाराज ने कहा ये रोचक है। So we're going to turn that statement हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, around into a practical way. एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से। In terms of, let's say, the situation which, one of the situations to try to help people to become Krishna conscious. ये एक ऐसी परिस्थिति है जो लोगों को कृष्ण भावना भावित होने में मदद करती है। You said down to earth. How many of you are farmers? आपने कहा कि जो पृथ्वी Hands से up if you're a जुड़ा हुआ है। farmer. आप में से कौन कौन कृषक हैं जो खेती करते हैं? You're a farmer? You put your hand up. Your great grandfather is a farmer. My great 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 grandfather was a farmer too. तो प्रभु जी कह रहे थे मेरे परदादा जी खेती करते थे। महाराज ने कहा मेरे भी Anybody here a doctor? कोई यहाँ पे डॉक्टर है? Anyone here his grandfather is a doctor? कोई यहाँ पे जिसके दादा डॉक्टर थे? It doesn't qualify if your grandfather is a doctor, does it? You तो can't say, well, I can help you, my grandfather is a doctor. तो आप ये नहीं कह सकते मेरे दादा डॉक्टर थे तो हाँ मैं भी डॉक्टर था, हाथ खड़ा कर सकता हूँ। Good example of humility there. ये विनम्रता का बहुत अच्छा उदाहरण है। Down to earth. Well, farming, why? Well, you're down to earth, okay. Now, even further down to earth is a worm. तो आप जब पृथ्वी से जुड़े होते हैं हाँ तो आप खेती कर रहे होते हैं, और पृथ्वी की तरफ जाएं तो एक कीड़े की तरह होते हैं। Pretty humble lifestyle, I think, being a worm. बहुत ही विनम्र जीवन है उस कीड़े का। And he won't get into the details of the life of a worm. तो हम एक जो कीड़े का जीवन है उसके Farming डिटेल is में नहीं kind जाएंगे। of down to earth. You can get proud of anything, but in terms of occupation, it's quite a humble occupation. मगर वो हाँ वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है मगर वो विनम्रता नहीं है, परंतु जो खेती है ये एक विनम्र स्वधर्म की तरह है। As we said, we're in this world because we're proud. So no degree of behavior in this world is truly humble. तो हम इस जगत में इसलिए हैं क्योंकि हम गर्वित हैं, और इस जगत में कोई भी असली में विनम्र नहीं है। It may help us to develop the absolute necessity of dainya, which is absolute requirement if one wants to enter into Vrindavan. तो हमें ये दैन्य विकसित करना बहुत मदद करेगा अगर हम वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि वृंदावन में जाने के लिए अनिवार्य है। Even if we want to chant Hare Krishna, in the Gaudiya Math of Bhakti Siddhanta Maharaj's Gaudiya Math, he said I can't remember the exact word, it slipped my mind. He said the main verse of our movement, of our mission is Trinadapi Sinichena, Tarodapi Sahishna. Our whole movement is based on that verse. तो कि अगर आपको हरिनाम जब भी करना है केवल तो भी ये बहुत आवश्यक है। गौड़ीय मठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमारे आंदोलन का मुख्य श्लोक है त्रिनादपि सुनेचेना तरोरहि सहिष्णुना। And three of the points you've mentioned, tolerance, humility and not taking any respect, तो कुछ जो आपने बिंदु यहाँ पे बताए हैं are जैसे in this कि very verse. सहिष्णुता और मान की अपेक्षा ना करना, ये इस श्लोक में है। They're like a prerequisite to chant the holy name, really. ये हरिनाम का जप करने के लिए अनिवार्य है। Chant the holy name in that mood, you're already in Vrindavan. इस भाव से हम जप करें कि हम वृंदावन में ही हैं। And there's Lord Chaitanya says, Trinadapi Sinichena. What does that mean? श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं त्रिनादपि सुनीचेना, इसका अर्थ क्या है महाराज पूछ रहे हैं। Lower than the straw in the street. So here we see Uddhava wants to be a blade of grass तो इसका अर्थ है तृण से भी नीचे मानना अपने आप or a को। herb, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उद्धव चाह रहे हैं, something or another on the ground. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उद्धव चाह रहे हैं कि वो एक घास का तिनका बन जाए या फिर एक लता औषधि बन जाए कि जमीन पे कुछ। That
he's witnessed the devotion of the gopis, so he may get that opportunity to have the dust of their feet. उन्होंने अब गोपियों की भक्ति के स्तर को देखा तो वो चाह रहे हैं कि He उनको एक worships अवसर that मिले dust. गोपियों की चरण धूरी प्राप्त करने का। Jayadvaita Maharaj was saying last week how one of Prabhupada's godbrothers wrote a book. And in this book, he said it was very, very wonderfully presented. जयद्वैत महाराज कह रहे थे, पिछले हफ्ते मैं सुन रहा था कि I've एक not read that book. उनके गुरु भाई ने एक पुस्तक में लिखा है और उनमें बहुत सुंदरता से उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो नहीं है। And this is the real, he was explained deeply how this is the real, our real business in life is to become just like this, to be under, always under the lotus feet of all the other devotees. तो वह इस चीज़ को बहुत गहराई से समझा रहे थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य, you know, it doesn't mean physically that you have to kind of, when someone's walking along, you kind of dive under their feet, trip them over or something. तो वह इस तथ्य को बहुत गहराई से समझा रहे थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम हमेशा भक्तों के चरणों के नीचे हों। इसका अर्थ ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से भक्तों के चरणों के नीचे जाने लग जाएं जब वो चल रहे In हों। practical terms, it's just a manifestation or understanding of Lord Chaitanya's, another one of his, you could say, primary instructions. तो यह उसे श्री चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षाओं में से एक की समझ है। Vipro nachanarapatir. You know that verse? You know it? Naham vipro nachanarapatir. Say it. ना हम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च नरपति ना वनस्थो गृह ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। Dasa, 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 dasa. Not grandfather, grandfather, grandfather. तो दास के दास के दास के दास बनना है, पिता के पिता का पर नहीं बनना। What's grand about our father is that maybe you became a devotee, but otherwise what's grand I don't know. तो हमारे दादा के बारे में यह महान है कि आप भक्त बन गए हैं, परंतु और कुछ Become the servant of the servant, 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 1,000 times removed. तो हमने दास के दास के दास का दास बनना है, 1000 बार दास के दास का That's a बनना है। subject in of itself. But back to the farmer. ये अपने आप में एक पूरा विषय है, परंतु वापस चलते हैं Farming is खेती पे। you could say the foundation, the down-to-earth aspect of human society. तो खेती एक पृथ्वी से जुड़े रहने का एक मनुष्य समाज के सबसे If मुख्य there's no चीज है। farmers on this planet, what will we do? अगर इस दुनिया पे कोई खेती ना कर रहा हो तो हम क्या करेंगे? What will you eat? आप क्या खाएंगे? Huh? You'll starve, will you? प्रभु जी कह रहे हैं हम भूखे मर जाएंगे। One devotee, I mean, I'm embarrassing it sounds. One he was asked, what would you happen if there was no, no food? He said, I'd eat a chicken. तो एक बार किसी से पूछा गया कि अगर दुनिया में कुछ खाने को ना हो तो आप क्या करोगे? तो वो कहते मैं चिकन खाऊंगा। But how long will that last? तो वो कितने समय It चलेगा? becomes animal society, doesn't it? Complete animal society. ये पशु समाज है। That doesn't help us in our spiritual lives. ये हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में मदद नहीं करता है। You don't find much humility in animal society. पशु समाज में हमें कोई विनम्रता नहीं ज़्यादा दिखती। So, Varna Ashrana, we haven't got much time, we'll have to zoom, I don't know what the time is. Is that clock, what does it say? 8:49. So, in the system, now this is another, let's say, foundational arrangement of the Lord to help us to develop humility. तो यह भगवान Genuine. ये भगवान का एक अरेंजमेंट है ताकि हम विनम्रता को विकसित कर पाएं। Not just like, you have terrible, wall or something, you paint it so it looks nice, you put some kind of thin cover on the wall so it looks nice, but behind is terrible. तो जैसे कि एक बहुत बड़ी दीवार है, उसके ऊपर आप पतला सा सुंदर पेंट कर दें, मगर हम जानते हैं उसके पीछे जो है वह बहुत गलत है, बहुत खराब है। Oh, we just very nice, have a nice day, how can I serve you? तो हम ऊपर से ऐसे कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, आपका दिन बहुत We अच्छा try to हो। put on a smile and a nice say and a nice word, but inside,
You have a totally different idea. तो हम बहुत ही मुस्कुराते हुए लोगों से कुछ बोलते हैं, परंतु अंदर हमारा बिल्कुल ही अलग कुछ चल रहा होता है। Humility is not an artificial imposition. तो विनम्रता जो है यह कृत्रिम रूप से थोपी नहीं जाती, It's a reality of your very conscious existence. ये हमारे चेतना का वास्तविक सत्य है। Not that outside you're trying to be humble and inside you're hoping to get respect or you're hoping to get a favor or you're hoping something or another. तो ऐसा नहीं कि हम बाह्य रूप से विनम्र दिख रहे हैं और अंदर से हम मान To better चाहते हैं, influence that person so you can get what you want and so on. हम कोई से मदद चाहते हैं, हम उस पर कुछ उसको प्रभावित करना चाहते हैं ताकि मुझे कुछ मिल जाए, Escape from some kind of punishment or something. या फिर हम किसी दंड से मुक्ति चाहते हैं, भाग जाना चाहते that's हैं। not what it is. ये विनम्रता नहीं है। But to transform the material conditioned humility into genuine humility. तो ये भौतिक विनम्रता को हमने बदलना है वास्तविक विनम्रता में। One of the things is Krishna Chaturvanya Maya Shrishtam has given us this Varna ashram system. तो कृष्ण ने हमें वर्ण आश्रम की पद्धति दी है। Even more, you could say, relevant to the present day. Our recent acharyas have given us Sankirtan. तो आज के समय के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे आचार्य ने हमें संकीर्तन दिया है। Now, here in India, it might not be quite as extreme, but when you go on Sankirtan in the West, तो यहाँ पे हो सकता है भारत में इतनी खराब परिस्थिति ना हो, पर जब आप पाश्चात्य देशों में संकीर्तन पे जाते I हैं don't तब, mean the west of India, the Western world. So to भारत के पश्चिम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम विश्व के पश्चिम भाग की बात कर maybe रहे here हैं। today, yes. Here's Ekanath Prabhu is from France, एकनाथ प्रभु यहाँ पे हैं, वो फ्रांस से हैं। and he likes to he's distributing books here also in India. तो ये भारत में ही पुस्तक वितरण कर रहे हैं। Every chance he gets, if anyone wants any books, you can see Ekanath Prabhu तो afterwards. जब भी उन्हें मौका मिलता है वो If पुस्तक you want वितरण करते French हैं। books, we have some French books. You can, many French people in Punjabi Bagh. Right? तो आपको कोई भी पुस्तक चाहिए हो, आप एकनाथ प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, और फ्रेंच भाषा में अगर आपको कोई पुस्तक चाहिए हो तो एकनाथ प्रभु आपको दे सकते If you हैं। go on Sankirtan in Paris, you will have to develop Trinadapi Sunichena. तो अगर आप पेरिस में संकीर्तन करने जाएंगे तो आपको त्रिनादपि सुनिचय विकसित करना ही होगा। The Parisians are very kindly helping us to develop this mood of Trinadapi Sunichena. तो They're very पेरिस की जो निवासी merciful. They तो- say no mercy. तो पेरिस के जो निवासी No हैं, thank you. That's if they're very nice. They say no thank you. The nice ones say no thank you. तो जो पेरिस के निवासी हैं वो बहुत मदद कर रहे हैं हमारी ये भाव विकसित करने में कि Probably त्रिनादपि no. सुनिचय का। You तो वो probably know in French that's no mercy. तो No mercy. वे बहुत कृपालु हैं क्योंकि वो कहते हैं हम आपके ऊपर कोई कृपा नहीं करेंगे। I won't say what the not so nice ones do or say. तो वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं चाहिए धन्यवाद, तो And मैं it's ये नहीं also बताऊंगा कि जो अच्छे लोग नहीं हैं वो क्या कहते A हैं। good lesson in tolerance. Huh? वह सहिष्णुता में बहुत You have अच्छा to पाठ पढ़ाते हैं। tolerate. सहन करना, सहन करना, सहन करना। The weather. Of course, you have very hot weather here. वहाँ का मौसम, यहाँ पे भी बहुत मौसम गर्म है, There they have very cold weather. वहाँ पे बहुत ठंड है। And you may be insulted again and again. बार बार वहाँ पे आपको लज्जित किया जाता है, You बेइज्जती की have to जाती be- है। Don't expect any respect. वहाँ पे आप किसी से भी किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। And practically you have to glorify people to get them to take a book. और वास्तविकता में आपको उन लोगों की सराहना करनी पड़ती है ताकि वो पुस्तक ले लें। So that's Sankirtan is the ideal service trying to preach Krishna consciousness for this natural awakening to grow, develop. तो ये संकीर्तन जो है ये एक आदर्श तरीका है कृष्ण भावनामृत को के प्रचार करने का और इस दुनिया में कृष्ण भावना को जागृत करने का। But the key feature is to associate with those who are genuinely humble. तो मुख्य अंग ये है कि हमें उनका संग करना होगा जो वास्तविक रूप में विनम्र हैं। Now it's all related in Varnashram also because the Varnashram system's given by God. तो यह सब वर्णाश्रम पद्धति से भी संबंधित है क्योंकि वर्णाश्रम पद्धति And- भगवान के द्वारा दी गई है। We're supposed to follow it.
और हमें इसका पालन करना चाहिए. Now, in Kali Yuga, everything's upside down. In Kali Yuga, everything's topsy-turvy, Prabhupada says. और कलयुग का अर्थ है सब कुछ उल्टा पुल्टा. You got the feet acting as the head, यहाँ पे पैर सिर का काम कर रहे हैं. right? The head is dead, सिर मर चुका है and the feet have taken over. और पैर सिर का काम कर रहे हैं. उन्होंने उनका Sometimes the stomach has taken over, but कभी कभी पेट सिर का काम कर रहा है. combination between the feet and the stomach. कभी पेट कभी सिर. There's no proper protection. कभी पेट कभी पैर सिर का काम कर रहे हैं. कोई रक्षा नहीं है. There's no brain. यहाँ पे कोई किसी के पास कोई बुद्धि नहीं है. So what to do? Hare Krishna. तो क्या कर सकते हैं? We हरे chant कृष्ण. Hare Krishna. But the idea of the Varnashram system is we follow the orders of the Supreme Personality of Godhead. तो वर्णाश्रम का तथ्य ये है कि हमें परम पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना है. Not just philosophically, but in our practical activities. सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं परंतु व्यावहारिक कार्यों से भी In our behavior. हमारे आचरण में आना चाहिए. And when humility is to accept a position which is appropriate for our condition, whatever that may be. तो विनम्रता का अर्थ है हमें वह स्वीकार करना चाहिए जो हमारी परिस्थिति के लिए अनुकूल है. And to follow the rules therein. और वहाँ के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका Not पालन to करना. imitate. Humility also is not to imitate others. विनम्रता का अर्थ ये भी है कि दूसरों In की other नकल ना words, करना. to be honest. इसका अर्थ है कि हमें It's हमेशा another aspect. Huh? ईमानदार होना है. So Varnashram systems to protect people in that way, so that they gradually can have this opportunity. When it's Daivi Varnashram, they can start to develop genuine humility. वर्णाश्रम का अर्थ है सबको यह एक मौका होना चाहिए ताकि वे धीरे धीरे अपनी स्थिति से ऊपर उठ सकें और प्रगति कर सकें. So you could say the thread here is to follow the authority. तो यहाँ पे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक जो अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करें. Even materially, or following the authority's order may also be seen, in some cases at least, as humility. तो हम भौतिक परिस्थिति में भी देखते हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी आज्ञा का हमें पालन करना पड़ता है. उसे भी कोई लोग विनम्रता कह सकते हैं. And it's absolutely required in spiritual life. और ये आध्यात्मिक जीवन में तो बिल्कुल ज़रूरी चाहिए. Now that authority, just like sometimes people will look at our Srila Prabhupada said, and they say, well, he doesn't seem to be very humble, he's getting angry. तो ऐसे अधिकारी का पालन करना जब हम देखते हैं कि वो बहुत विनम्र नहीं लग रहे, वो तो कह रहे हैं कि वो तो गुस्सा कर रहे हैं. He doesn't seem to be very humble, he's very passionate. तो हम अधिकारियों को ऐसे देखते हैं कि वो बहुत विनम्र नहीं लग रहे, ये तो बहुत राजसिक हैं. Well, that from a material perspective, maybe a mundane conditioned soul will see like that. भौतिक दृष्टिकोण से हो सकता है एक भौतिकवादी ऐसा देखे. Because they don't understand what is this dainya, this genuine, utter humility. क्योंकि वह समझते नहीं कि ये दैन्य क्या है, ये तीव्र विनम्रता क्या है. Because the humility of the pure devotee is he's following his spiritual master, who's following just like your grandfather's example. Your grandfather's a farmer, your father's a farmer, and you're a farmer, right? तो You're जैसे not following the line of succession. तो जैसे एक विनम्रता का अर्थ है कि शुद्ध भक्त जो हैं वे अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं और वह गुरु अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं. जैसे कि प्रभु जी के दादा कृषिक थे, इनके पिता भी कृषिक थे और ये भी कृषिक थे. प्रभु जी ने कहा नहीं, come again and preach to you about farming. तो प्रभु जी ने कहा नहीं, मैं खेती नहीं कर रहा. तो महाराज ने कहा परंपरा का पालन नहीं कर रहे, कृष्ण को आना होगा और आपको खेती सिखानी होगी. What are you, an IIT specialist or something? What do you do? IIT? तो आप क्या कर रहे हैं? IT. Student of what? He's studying arts, BA program. Arts. Painting artist. History, geography. I did history and geography as well. I did history, geography, and economics.
तो प्रभु जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। When I finished the course, I joined the temple. महाराज कह रहे हैं जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी तो मैं मंदिर ज्वाइन कर लिया था। Okay? Hare Krishna. So the secret is they follow their order of their spiritual master and they follow their order. This is Gopi Bhatta Padakamalam Dasa 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 Anudasa. तो रहस्य ये है कि जो गुरु हैं वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। यही है दास दास दासानुदास। It's going back all the way to Krishna. You following Krishna's instruction. और ये कृष्ण तक जाता है और हम ऐसे ही कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। And in this way, it doesn't happen just like that, but it's the process of transformation by following this process. तो इसी तरीके से ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाता है, धीरे धीरे हमारे में बदलाव आने लगता है, हम And you प्रगति can करते see हैं। that, you know, and I don't want to do it, but you do it because your spiritual master asked you to do it. तो हम देख सकते हैं कि The हमारे Vedas say we should do it, huh? तो Scriptures. मेरी इच्छा नहीं है करने की, फिर भी मैं करूँगा क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने कहा है, वेद कह रहे हैं कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। Submitting oneself to a higher authority, it's also humble. अपने आप को समर्पित करना एक अधिकारी के प्रति ये विनम्रता है। You could go on with different angles of understanding of humility, but let's go to utter humility. हम बहुत सारे दृष्टिकोणों से विनम्रता को देख सकते हैं, परंतु हम तीव्र विनम्रता दैन्य की तरफ चलते हैं। So in a very small nutshell, we've just given a little bit of you could say the process of coming to that. We follow the line of humility. तो मैं आपको बहुत ही सारांश रूप में बताता हूँ कि ये इस तक कैसे पहुँच सकते हैं, दैन्य तक विनम्रता का पालन करते Which हुए। goes all the way back to the gopis. तो ये जाता है गोपियों तक। Pretty lucky, yeah? Connected through the parampara to the gopis. परंपरा से होते हुए गोपियों की तक। So this being a blade of grass, being taught, is to be in that situation of placing oneself in that servant of the servant and in the disciplic succession like that. तो एक घास के तिनका बनने का अर्थ है कि ऐसी परिस्थिति में अपने आप को डालना कि हम एक दास का दास माने अपने आप को। And ultimately, if you look at the songs of Bhakti Vinod Thakur, for instance, तो अंततः अगर आप देखें भक्ति विनोद ठाकुर के भजनों को, he's written songs in Dainya and in one of his compilations, which one it is I can't remember, but there's a whole series of songs on Dainya. तो उन्होंने पूरी एक भजनों की श्रृंखला लिखी है जो केवल दैन्य पे है। The inner mood of a pure devotee of the Lord. तो दैन्य जो एक शुद्ध भक्त का आंतरिक भाव है। And when Prabhupada was in Paris, actually, in 19 something or another, 70 something, तो प्रभुपाद 1970 के दशक में जब पेरिस में थे, one of Prabhupada's disciples named Hari Vilas Prabhu प्रभुपाद के एक शिष्य जिनका नाम था हरि विलास प्रभु asked Prabhupada, what is humility? उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि विनम्रता क्या है। And Prabhupada answered that humility means that not your wife, not your family, not your society. तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि विनम्रता का अर्थ है कि आपकी पत्नी नहीं, आपका परिवार नहीं, आपका समाज भी नहीं, Not your government, not your army, not your gun, आपकी सरकार नहीं, आपकी सेना नहीं, आपकी बंदूक not नहीं, your doctor. आपका डॉक्टर नहीं, Nobody can save you. आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, Only Krishna can save you. केवल कृष्ण आपकी रक्षा कर सकते हैं। If we are convinced of that, absolutely, that is humility. अगर आप इस तथ्य से पूरी तरह इसको समझ गए हैं, वो है विनम्रता। We have no other shelter. हमारे पास कोई और आश्रय नहीं है। One depends entirely upon Krishna's mercy. हम कृष्ण की कृपा पर पूर्णतः आश्रित हैं। One is very meek and humble. That's one of the characteristics of Sharanagati. तो एक व्यक्ति बहुत विनम्र है और दैन्यता का अनुभव कर रहा है, यह शरणागति का एक लक्षण है। Seeing everything in relationship with Krishna. हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखना। And acting entirely according to Krishna's will. और पूर्णतः कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करना। It's quite simple. This is humility. Is to simply act
for the pleasure of Krishna. ये बहुत सरल है। विनम्रता का अर्थ है कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। So we're practicing that principle. हम इस तथ्य की साधना कर रहे हैं, इसकी This is प्रयास कर रहे हैं। the practice which can awaken prema, तो ये वह प्रयास है जो प्रेम को जागृत कर सकता है। proportionate to the awakening of humility. तो जितना हमारी विनम्रता जागृत होगी उतना ही प्रेम जागृत होगा। In the spiritual realm, that even that thought is not there. तो आध्यात्मिक धरातल पर ये विचार भी नहीं होता। I have to please Krishna. वहाँ से केवल यह विचार है कि हमें कृष्ण I have to be humble. तो कृष्ण के प्रसन्न करना है। वहाँ पे ये विचार भी नहीं है कि मेरे को विनम्र बनना है। There's no time for such a thought. तो ऐसे विचारों का भी कोई समय नहीं है वहाँ पे, Because there is no other thought. क्योंकि वहाँ पे कोई और विचार है ही When we नहीं। say like that, I have to please Krishna, indicates something other than pleasing Krishna. तो अगर ये विचार आपको आ रहा है कि मेरे को कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसका मतलब कोई और विचार भी है। The gopis in Vrindavan know nothing else but pleasing Krishna. They don't know anything else. इसका मतलब ये है कि यह विचार भी नहीं होता आध्यात्म They जगत में, जैसे live for गोपियों को Krishna. कुछ और They पता ही नहीं exist है। only for Krishna's pleasure. There's not like this or that. There's nothing else. That's all it is. उनका जो वास्तविकता है, उनके जो एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वो और कुछ जानते ही नहीं। This is utter humility. There isn't anything else. That's all there is. It's just this total, whatever you want to call it, complete utter humility, dainya, love for Krishna. तो ऐसा नहीं है कि कुछ और चीजें भी हैं और कृष्ण को भी प्रसन्न करना है। वहाँ पूर्णतः कृष्ण को प्रसन्न करने का ही भाव है और कोई विचार भी नहीं है। ये है You see असली that in the दैन्य। example when was it Narada Muni who was sent to Boma, to this material world to see the levels of devotion, different levels of devotion of Krishna's devotees. तो उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि नारद मुनि जब गए थे कि अलग अलग भक्ति के स्तरों को देखने, Krishna told him, I have a headache. कृष्ण ने कहा कि मेरे सिर में दर्द है, And the only thing which will cure my headache is the dust from the feet of my devotees. और ये एक ही तरीके से ठीक हो सकता है जब मुझे भक्तों के चरणों की धूली मिलेगी। Now that's an interesting point because sometimes people think, I will serve Krishna. और यह एक रोचक विषय है क्योंकि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। That's not dainya either. ये भी दैन्य नहीं है। Because even in the spiritual realm, it has those other aspects that humility is. I'm not qualified. I'm not qualified to bring pleasure to Krishna. तो आध्यात्मिक धरातल पे यह विचार भी होता है कि अपने आप को Everyone else is more qualified than me. कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए योग्य ही नहीं हूँ, बाकी सब मेरे से ज्यादा योग्य And हैं। Radharani is trying to bring all the other devotees to bring pleasure to Krishna. They're trying to bring Radha and every single situation like. श्रीमती राधा रानी अन्य भक्तों को कह रही हैं कि आप कृष्ण को प्रसन्नता दीजिए, बाकी भक्त राधा रानी को कह रहे हैं। Proud of our service, I'm the best, or I'm doing so much service. This comes. वहाँ कोई सेवा का गर्व नहीं है कि देखो मैं सबसे अच्छा सेवक हूँ, हाँ बहुत अच्छी सेवा Anyway, करता हूँ। Narada Muni went to the earth to get the dust to cure Krishna's headache. तो नारद मुनि पृथ्वी पर आए कि कृष्ण के भक्त के चरण की धूली लेने, कृष्ण का सरदर्द दूर करने के He लिए। went here and there, but nobody would give their dust. I mean, Krishna, the dust of my feet on Krishna's head, this is sinful. I can't do that. I'll go to hell. वो इधर उधर सब जगह गए और उन्हें कहीं पे किसी भक्त के चरण धूली नहीं मिल रही कि मैं कैसे कृष्ण को चरण धूली दे दूं, कृष्ण के सर पे लगेगी, मैं नरक जाऊंगा। He couldn't get the dust, उनको नहीं मिली चरण धूली। And then eventually he came to the gopis और बाद में वो गोपियों के पास आए and said that Krishna's got a headache. और उन्होंने कहा कृष्ण के सिर में दर्द है, He wants the dust of your feet. उनको आपके चरणों की धूली He चाहिए, said that will cure his headache. उससे उनका सर दर्द दूर हो जाएगा। Quick, take the dust, run, quickly. जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, भागो भागो भागो। Oh, you silly girls. Narada Muni said, you silly girls. नारद मुनि ने कहा आप बहुत You ही, don't know anything, Don't you know you'll go to hell if you do this? आपको कुछ पता नहीं है, आप एक बालक की तरह हैं, आपको पता नहीं है आप नरक जाएंगे। What does that matter? Who cares less if we go to hell? All that matters is Krishna.
तो गोपियाँ कह रही हैं कि इससे किसको फर्क पड़ता है Let कि us हम rot in hell नरक for जाएंगे। eternity. As long as Krishna's headache is cured, that's all that matters. अगर कृष्ण का सिर दर्द ठीक हो सकता है और हम हमेशा के लिए भी They नरक में don't पड़े care रहे a तो कोई damn फर्क नहीं about पड़ता। themselves. तो हमें अपने बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। Of course, they'll dress nicely. Why? Simply to try to please Krishna, that's all. तो वह अपना श्रृंगार भी इसलिए करती हैं क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना Their है। whole existence is simply nothing other than just what pleases Krishna. उनका जो अस्तित्व है पूर्णतः वो सिर्फ यही है कि Everyone else कृष्ण has को a क्या little पसंद bit of करता है। a little bit of limitation, you could say, in that regard. सबके पास कोई ना कोई सब लोग सीमित हैं Or even worse, an ulterior motive. और कईयों के पास कुछ अलग भाव भी हैं। If I please Krishna, I will get a nice new car. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर कृष्ण को प्रसन्न करूंगा तो मुझे अच्छी नई We're back गाड़ी down to मिलेगी। the material world now. We're back in the material world अब हम now. वापस भौतिक जगत में आ गए हैं। I'll get a nice house in Punjabi Bagh. मेरे को बहुत अच्छा घर मिल जाएगा पंजाबी बाग में। I'll be promoted to the temple president. मेरे को मंदिर का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। I'll get sannyas. मेरे को सन्यास मिल जाएगा। Maybe I'll become a guru. शायद मैं गुरु भी बन जाऊं। Maybe I'll become very rich. Maybe I'll become an avatar. शायद मैं बहुत धनी बन जाऊं या फिर मैं शायद अवतार बन जाऊं। Or maybe I'll merge into the Brahma Jyoti. या फिर मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं। Or perhaps I can go to Vaikuntha. शायद मैं वैकुंठ भी चले जाऊं। A pure devotee doesn't have any desire. एक शुद्ध भक्त को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। Simply wants to please. He doesn't care. Narayana Paraksavena Kataschana Bibit. He doesn't care where they go. They शुद्ध don't भक्त care. शुद्ध भक्त को फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ पे है कि They उसको क्या मिल simply रहा है। want to please Krishna. वे सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। Whatever it takes. So Uddhava wants to have that association of such devotees. तो उसके लिए कुछ भी चाहिए वो करने को तैयार है। उद्धव ऐसा संग चाहते हैं। He wants to, well, what can we say? Different moods, slightly different moods, you could say. Every individual has their own unique relationship with Krishna. We can't imitate the gopis. उद्धव का थोड़ा सा अलग भाव है। हर कोई एक व्यक्ति है और हर We're कोई not- गोपियों की नकल नहीं कर सकता। उद्धव We're का जो not- भाव है वो हल्का अलग है। We're not Govinda Ghosh. This is Disappearance Day today. कि हम गोविंद घोष नहीं है, उनका आज तिरोभाव दिवस है। Who was Govinda Ghosh? गोविंद घोष कौन है? Who was he? Don't tell me he was a devotee who used to live here in this temple. तो ये मत कहिएगा कि हाँ वो भक्त जो यहाँ पे रहते Who had the थे name Govinda Ghosh. No, जिनका the नाम original Govinda Ghosh. Who is he? उनका नाम गोविंद घोष था। मैं पूछ रहा हूँ कि जो असली गोविंद घोष जिनके आज तिरोभाव दिवस है वो कौन है? महाराज पूछ रहे हैं। Yeah, a hand is up there. Pardon? An associate of Lord Chaitanya. You're चैतन्य महाप्रभु के correct. पार्षद। There were सही। 3 brothers: Vasudev Ghosh, Madhava Ghosh, and Govinda Ghosh. वे 3 भाई थे, वासुदेव घोष, माधव घोष और गोविंद घोष। They were very good musicians, तो वे बहुत अच्छे संगीतकार थे। very good mridangas and singers and this and that. तो बहुत अच्छे मृदंग बजाते थे, गायक थे और बहुत कुछ। You can see oftentimes they'd be leading the kirtans at Rath Yatra. तो बहुत बारी वो रथ यात्रा में कीर्तन Yeah. को लीड करते थे। Yeah. Playing their part. Why? To bring pleasure to Lord तो Chaitanya. वे अपना कार्य क्यों कर रहे थे, अपना भाग क्यों अर्पित कर रहे थे? क्योंकि We come in there with चैतन्य महाप्रभु को our प्रसन्न drum करते थे। bass. Listen to me. Boom, 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 boom. तो हम boom, boom. बड़े सा जेम्बे लेके आते हैं, बजाते हैं कि हाँ सब लोग मुझे Are we सुने। doing it to please Krishna, or are we doing it for some other हम किस reason? लिए बजाते हैं? कृष्ण को Because प्रसन्न we के लिए, like it, maybe, or we hope that others will be impressed sometimes. तो क्या हम बजा रहे हैं ताकि कृष्ण को प्रसन्नता हो या फिर कुछ लोगों को लगे कि हम बहुत अच्छा बजाते हैं? But no, they weren't like that. They were playing the mridangas and dancing to the heartbeat of Lord Chaitanya. तो वो मृदंग बजा रहे थे, नाच रहे थे किस चीज़ में? श्री चैतन्य महाप्रभु की धड़कन पर। Of course, they're eternal associates, and they come in this world to help others by their association to develop this quality of dainya. निश्चित रूप से वह चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं और इस जगत में आते हैं क्यों? इस दैन्य को विकसित करने के लिए और ज़्यादा। Everything, the Sankirtan movement being the, you could say, the manifestation in this world of Rasa Leela, the most intimate pastimes of the Lord. तो संकीर्तन लीला जो है वो रास लीला का ही एक रूप है, भगवान के सबसे गुह्य लीलाओं में से जो है। By their presence, and when we hear about their wonderful kirtan, their Sankirtan,
it helps us to become a little bit more purified of ulterior motives. तो जैसे हम जब इस संकीर्तन को सुनते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो हम भी अपने जो गलत भाव हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं. There are different, if I remember rightly, I mean, sometimes it's said that he is Rangadevi in the spiritual realm. कभी कभी कहा जाता है कि वे आध्यात्मिक जगत में रंग देवी हैं. He's said to be an associate of Lord Nityananda, more like one of the Gopas. तो वह कभी कभी कहा जाता है कि वे एक नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं जो गोप की तरह. That's another subject. वह एक अलग विषय है. But anyway, today is his disappearance day. तो आज उनका तिरोभाव दिवस है. So we have a feast today. तो आज एक फीस्ट है सबके लिए. Right. प्रसाद. Big feast. Right? बहुत बड़ी फीस्ट है. Big feast today. We're going on Harinam today, is it? वह है कि हम हरि नाम पे जाएंगे आज. 24-hour Harinam starting after breakfast. 24 घंटे हरि नाम प्रसाद के बाद. With 12 madungas. मृदंग लेकर. No djembes. जेम्बे को नहीं ले जाएंगे. All dancing. बहुत नृत्य. And singing. बहुत non-stop. बिना रुके. Right? No. No. So what is it then? What are we supposed to do? We mention his name and we pray to him for his mercy that we can become like a little grain of dust at his lotus feet and serve our spiritual master in whatever way the spiritual master wants. तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उनके चरणों में एक धूलि का कण बन जाएं और हम अपने गुरु की सेवा कर पाएं जैसे हमारे गुरु चाहते हैं. How can I serve? It was like Arjuna's humility was he did what Krishna said and he killed people. तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं? अर्जुन की विनम्रता यह थी कि कृष्ण ने कहा और उन्होंने लोगों का वध किया. Follow your spiritual master's order. That's humility. अपने गुरु के आदेशों का पालन करें, यह विनम्रता है. It's also humble to find out how to follow it. It's also necessary to find out how to follow it. तो यह भी जरूरी है कि हम ये ढूंढें कि उनको. Don't speculate. Speculation is not humility. तो हम ये विचार करें, ढूंढें कि उनका पालन कैसे करें. It's the opposite. अपने मनगढ़ंत विचारों से सेवा करना विनम्रता नहीं है. Being weak and I'm useless is not necessarily humility. Being weak and saying I'm useless, Prabhu, I can't do anything. तो कमजोर होना और समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यह विनम्रता नहीं है. Not humility. That may be an excuse, but it's not humility. ये विनम्रता नहीं है, ये बहाना हो सकता है. Whatever we are, we offer that to the spiritual master. तो जो भी हैं हम अपने गुरु को अर्पित कर दें. Do as you wish with me. कि आप जो चाहते हैं वो करें. This is the mood of a genuine devotee. यह भाव होता है एक असली भक्त का. We got dust push into the ocean like the spider, or whatever it is, we do whatever is within our capacity under the guideline of the spiritual. तो जो भी हमारे लिए संभव है वो हम करें गुरु के आदेशों के अनुसार. Accepting whatever mercy comes. तो जो भी कृपा होती है उसे स्वीकार करना. I'm a PhD. I don't wash pots. मैं PhD नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ. Give me some service which is appropriate to my qualifications. मैं PhD हूँ, मैं बर्तन नहीं दूंगा, कुछ ऐसा दीजिए जो मेरी योग्यताओं से मैच करता हो. We were reading the other day from Bhakti Siddhanta Vaibhav. कुछ दिन पहले हम भक्ति सिद्धांत वैभव से पढ़ रहे थे. One, I can't remember his name, but one educated man came to take shelter of Bhakti Siddhanta Maharaj. तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का आश्रय लेने आया. And he asked Bhakti Siddhanta Maharaj if he was educated in Sanskrit. He said, I want to hear, I would please if one of your very erudite students, one of your erudite disciples could please teach me, give me teaching in the philosophy of Vaishnavism. तो वह भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर पे आया, के पास आया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके शिष्य में से कोई एक मुझे बहुत ही जो बहुत पंडित शिष्य हो, बहुत विद्वान शिष्य हो, वो मुझे सिद्धांत पढ़ाए. Bhakti Siddhanta Maharaj said, yes, you can go and find one of my disciples. He's around somewhere. His name is Ramdas. You can ask where he is. भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा कि हाँ आप ढूंढ सकते हो, एक मेरा शिष्य है जिसका नाम है रामदास. Asking the devotees, do you know Ramdas is here? Ramdas? तो फिर वो ढूंढने लगा, रामदास है यहाँ पे, रामदास है. He's out there. He's in the garden at the moment. He's out in the garden. तो वह अभी बगीचे में है. He's a farmer. वह खेती करता है.
gardener. He went out into the garden तो वह बगीचे में गया and someone said, that's Ramdas over there. तो हाँ वहाँ पे उन्होंने देखा वहाँ पे रामदास है There's Ramdas. He wasn't even a Brahmin. तो वहाँ रामदास था वो ब्राह्मण भी नहीं था He only took first initiation. उनके सिर्फ पहली दीक्षा हुई थी Bhaktisiddhanta Sat Maharaj, it's not important to take second initiation. भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है दूसरी दीक्षा लेना Perfection through Nam. हरि So he नाम was से out in the garden and looking after the plants. तो वो उस बगीचे में थे कि पौधों को देख रहे थे वहाँ He पर had a lungi on, उन्होंने लुंगी पहनी थी and this very erudite scholar was wondering, maybe there's a mistake here. तो ये जो विद्वान था वे सोचता है कि यहाँ पे लग रहा है किसी से गलती हुई है Maybe Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Maharaj got it wrong. It doesn't look like he's an erudite scholar. भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर शायद थोड़ा गलती हो गई उनको He समझ was नहीं आया illiterate. He couldn't read or write. ये तो विद्वान नहीं लगता He said, are you Ramdas? उन्होंने जाके उनसे पूछा कि Yes. क्या आप रामदास हैं Well, Guru Maharaj has sent me here to take shastric lessons from you on the philosophy of Vaishnavism. गुरु महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है शास्त्रों को पढ़ने के लिए वैष्णव सिद्धांत को And he समझने said- के लिए He was equally bewildered. I think you've got this wrong. I don't even know how to read or write. तो रामदास बहुत अचंभित हो गए वो कहते मुझे तो लिखना भी नहीं आता पढ़ना भी नहीं आता I can't teach you that. मैं ये सब आपको नहीं सिखा सकता So he thought, the scholar went back to Bhaktisiddhanta Maharaj and thought maybe made a mistake or something, a wrong person. तो विद्वान ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के पास वापस गया कि कुछ You गलती go हुई and है listen to him, he knows everything. तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने He कहा went कि वो back सब कुछ जानता है And what did he teach him? He taught him property. He taught him surrender. That's all he knew. He said, all I know is to surrender to my spiritual master and do whatever he tells me to do. तो मैं वापस गया और उन्होंने पूछा कि आप क्या जानते हो तो वो कहते कि मैं सिर्फ शरणागति जानता हूँ जो मेरे गुरु मुझे कहते हैं वो मैं करता हूँ And that's it. That's the whole purpose of all the philosophy. तो यह हमारे सिद्धांत Summed का up in a प्रयोजन couple of है lines. He actually knew the philosophy because he would listen to Bhaktisiddhanta sometimes and hear it. But from the point of Shastra, he didn't have any Shastric. तो यह वे सिद्धांत सब जानते थे और वो भक्ति But सिद्धांत he श्री knew ठाकुर the को most सुनते थे important thing of all, property, full surrender. तो यह सारे सिद्धांतों के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य Whatever है you कि say, if my Guru Maharaj पूर्ण tells me to go away, I'll go away. If he tells me to bury my head in the ground, I'll bury my head in the ground. तो यही पूर्ण शरणागति हमारा सिद्धांत है अगर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि चले जाओ तो मैं चले जाऊंगा वो कहते हैं कि मैं अपना सिर जमीन में गाड़ दूं तो गाड़ दूं Everything is revealed as they surrender unto me. तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है इस So शरणागति the से scholar was humble and he realized that and he realized what was going on and he became a devotee. इस विद्वान को एक पाठ मिला वह विनम्रता सीखा और वह फिर भक्त बन गया Out of humility, I'll stop there. I've gone over time. That's why I took my glasses off so I couldn't see the तो time. विनम्रता पूर्वक मैं यहाँ पे विराम दूंगा मैंने चश्मा उतार लिया था तो मैं समय नहीं दिख रहा था We could go on, but we won't go on any further. We'll finish there. Any humble comments or humble challenges or humble objections or humble corrections or? किसी की कोई विनम्र टिप्पणी किसी को विनम्र I'll have to eat humble pie. तो मैं कुछ विनम्र प्रसाद लेना चाहूँगा Let's hear some humble comment. किसी की कोई विनम्र टिप्पणी है तो हम सुनना चाहेंगे That's made you think twice before opening your mouth, hasn't it? इस वजह से Yes. आप Our सोच रहे होंगे questions, our comments should be humble. तो हमारे प्रश्न और हमारी जो टिप्पणियां हैं वह भी विनम्र होनी चाहिए Not with trying to show off ऐसा नहीं कि हम दिखावट करना चाहते हैं challenge or whatever. और हम किसी को चुनौती देना चाहते So हैं let's hear some humble words from your mouths. तो हमारे मुख से विनम्र शब्द निकलने चाहिए प्रणाम महाराज हरे Or कृष्ण maybe you want to fill your humble mouth with humble prasadam. तो आप शायद अपने विनम्र मुख को विनम्र प्रसाद से भरना चाहते हैं हरे कृष्ण महाराज हाँ Has our farmer got something to say? तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं Or जो खेती our करते हैं? down to earth devotee over there? Well, I don't know what they do if he's still here or not. He's या gone. वो They've left. They've gone down to earth. Yes, महाराज one question or one comment?
Question, okay. Maharaj, you spoke that you joined Krishna Consciousness Temple just after completing your studies. So Maharaj, it will be very kind if you will share the... I worked on a farm for about 3 months, digging potatoes and picking fruits and what have you. तो मैंने 3 महीने खेत पे काम किया, मैंने खुदाई करी और मैंने वो फल तोड़े. And then during that period of time, कुछ समय के बाद, this is too long a story to tell. ये बहुत लंबी कहानी है बताने के लिए, Because it involves exactly what we've been talking about. क्योंकि यह उस चीज़ को दर्शाता है जो हमने बात की अभी. How our thoughts of being humble are actually proud. जैसा कि हमने And how चर्चा की Krishna crushes our pride. हमारे विनम्रता के विचार भी गर्व हैं, और I'd heard कृष्ण of इसको कैसे, Krishna. I'd read many books about Krishna. कृष्ण कैसे इस I'd never गर्व को heard चूर of चूर the, करते I'd हैं. never heard of ISKCON or met any member of the Hare Krishna movement at that point. मैंने कभी कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ा था, नहीं सुना था, ना ही मैंने कभी किसी And- भक्त से भेंट करी थी. And I was a little bit, I still am, but I was, I don't know say I was any more proud than I am now, but I was certainly proud. महाराज कह रहे हैं कि मैं बहुत गर्वित था, हालांकि अभी भी हूँ, I पर thought बहुत गर्वित था तब. I thought I was something special, मैं सोचता था मैं बहुत विशेष हूँ, and some kind of messiah or something. और मैं कोई मसीहा हूँ जैसे. So Krishna really crushed my pride like hell, कृष्ण ने मेरे गर्व को चूर चूर कर दिया सब. and I realized I was crushed like hell. I was crushed like in hell, तो मैंने देखा कि मेरे को ऐसे चूर चूर कर दिया गया and I जैसे. realized it, and it changed my life. तो मैंने ये देखा I कि didn't इसने know it was Krishna. I just was crushed, तो मेरा जीवन उससे बदल गया. मुझे तब पता ही नहीं था कि कृष्ण कर रहे हैं, परंतु मैं चूर चूर हो गया था. I there and then decided to change my lifestyle. तो तब मैंने सोचा कि मैं अपने And जीवन this शैली is को too long बदलूंगा. a story to tell why, but I can only say the effect of that was I vowed that very day that happened to never eat meat again and never to take any intoxicant again. तो ये बहुत लंबी कहानी होगी अगर मैं पूरी बताऊंगा, परंतु मैंने ये उस दिन प्रण ले लिया कि मैं कभी दोबारा मांसाहार नहीं करूंगा और कभी दोबारा नशा नहीं I'm करूंगा. not going to tell why I made that vow, but it's related to the whole pastime, which तो too long to tell. मैंने ये क्यों लिया ये प्रण, ये बहुत लंबी कहानी होगी, परंतु And इस then जो shortly हमने after that, I found myself with old friends from my college days, उसके बाद मैं अपने जो मेरे कॉलेज के पुराने मित्र थे उनके and साथ they were मिला. all taking intoxications. ये सब नशा करते थे. I don't mean liquor, I mean drugs. Drugs. तो नाना प्रकार के नशीली पदार्थों का इस्तेमाल And करते I'd थे. made this vow never to take drugs again. मैंने ये प्रण लिया था कि मैं दोबारा कभी नशीले पदार्थों का So इस्तेमाल it नहीं was करूंगा. quite a challenging situation. ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था. This is a real test. ये एक परीक्षा थी. For whatever good fortune, I was able to pass the test. तो सौभाग्यवश मैं इस परीक्षा को पार कर पाया. And I didn't take drugs. मैंने नशा नहीं किया And I served them actually, I cooked for them. और उनकी मैंने उल्टा सेवा करी. मैंने उनके लिए I was भोजन bored, पकाया. very bored. मैं Bored. बहुत ही And then I was bored था. looking for something to read. मैं बहुत ही बोर हो रहा था और मैं कुछ पढ़ने के लिए ढूंढ रहा था. And I found for the first time in my life the Srila Prabhupada's literature. Srila Prabhupada's literature. और तब मेरे को पहली बार अपने जीवन में प्रभुपाद के ग्रंथ मिले. Back to Godhead magazine. एक भगवत In दर्शन their पत्रिका, apartment, they were living in an apartment in Birmingham. जहाँ पे वो रह रहे थे बर्मिंघम में, वहाँ पे मुझे एक भगवत And दर्शन I पत्रिका मिली. wondered, what is this? It looks so amazing, these colorful magazine. तो मैंने पूछा ये क्या है, ये बहुत Picked it अद्भुत up. दिखता है ये सुंदर And पत्रिका. I read it all night long, back and forth, 2 magazines. I read them back to front. तो पूरी पत्रिकाएं मैंने 2 पत्रिकाएं पढ़ी पूरी रात जाग And कर. I was convinced this is it. This is what I'm looking for. तो मेरे को समझ आएगी कि यही है जो मैं ढूंढ रहा था और So- मैं जीवन समर्पित करूंगा. Those 2 main things that, let's say, ये 2 मुख्य चीजें थी. negative experience, having such a hellish, Krishna smashed me into hell, and I didn't know who did it, but it happened. And then coming across the positive thing, Prabhupada's literature, Krishna literature. तो यह 2 मुख्य चीजें थी. एक
तो कि जो मेरे नकारात्मक चीज़ हुई कि मुझे पता लगा कि ये दुनिया में सब दुखी And है I और ये started chanting Hare Krishna that very day. तो ये नारकीय दुनिया है। I और read दूसरा जो it सकारात्मक said you should chant Hare Krishna. और सकारात्मक चीज़ की है I'd कि already मुझे heard Hare Krishna on music. It was a record that was famous then. सकारात्मक चीज़ ये कि मुझे पत्रिका मिली और मैंने उसे पढ़ा So I और knew. I started singing Hare Krishna. और उसी दिन मैंने जब On that day. प्रारंभ कर दिया। मैंने केवल then- जब को एक कैसेट में सुना था, परंतु मैंने उसे I सुन went के back जब to the प्रारंभ किया। farm, and once I was farming, I was chanting Hare Krishna. तो उस पुस्तक में लिखा था कि जब करना है जब शुरू किया, और फिर मैं वापस उस खेत में चला गया और खेत में काम then- करता था और जब करता था। About a month later, I was able to go to the temple. I couldn't go because I was working. But about a month later, I finished the work and I went to London and went to the temple. तो तब मैं मंदिर नहीं जा पाया और फिर 1 महीने तक मैंने वो कार्य पूरा किया, फिर मैं वापस लंदन गया और मंदिर गया। And that will be another 8-hour class to tell what happened on it. इसमें और 8 घंटे लग जाएंगे बताने में। I was in the temple for 8 hours, but I can speak about 8 hours about that 8 hours. I could speak for 8 hours about that 8 hours. तो मैं 8 घंटे यहाँ पे कैसे बोलूँ? You didn't understand what I said anyway. महाराज You कह रहे हैं, can't मुझे समझ- understand because, you know. Anyway. And when I went to the temple, I didn't join straight away, although I was convinced this is it. तो मैं जब मंदिर गया तो मैंने तब किया तभी मतलब मंदिर ज्वाइन नहीं किया, परंतु मेरे को ये समझ गया था I कि मैं यही waited करना another है। 6 months before I joined. तो मैंने 6 महीने इंतजार किया। I got ज्वाइन करने another से पहले। job working in a factory, तो मैंने एक और नौकरी ली, एक cleaning फैक्ट्री में काम करने। cleaning the floor. तो I was the cleaner, जमीन को साफ करने की। factory cleaner, तो मैं उस फैक्ट्री में Horrible. झाड़ू पोछा कैसे करता machinery था। factory. I had to clean up all the garbage and all the तो मशीनों को साफ करता था, उसमें से कूड़ा निकालता था। metal filings and what have you, noisy, dirty. तो वो बहुत शोर होता था वहाँ पे, बहुत गंदी But I जगह was थी। feeling happy like I'd never felt before. परंतु मुझे इतनी खुशी हो रही थी जैसे मुझे Because कभी I नहीं हुई was थी, chanting Hare Krishna the whole time. क्योंकि मैं हमेशा हरे कृष्ण का जप कर रहा था। Every moment, every spare moment, I managed to get a Bhagavad Gita, you see. I हर managed to क्षण buy one. हर क्षण जब भी मुझे समय By मिलता था मैं भगवद गीता पढ़ता Prabhupada. था। I'd read many other versions, but now I had Prabhupada's version. मैंने बहुत सी भगवद गीताएं पढ़ी थी, मगर अब मैं That was प्रभुपाद the की भगवद abridged गीता one. पढ़ता The था। big one had not been printed then. It was तो only तब a एक- short one. तब एक संक्षिप्त भगवद गीता आती थी प्रभुपाद की, And पूरी बड़ी वाली every तब तक spare नहीं थी। moment, I'd clean as quickly and perfectly as I could. तो मैं बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से सारी So सफाई करता every था। spare moment, I'd open up the Bhagavad Gita and read it. जैसे ही मुझे समय मिलता था मैं भगवद गीता पढ़ता था और उसे I started to learn how to offer food at home. और मैंने अपने घर पे भगवान को My भोग लगाना parents प्रारंभ किया। Thought I'd gone completely mad. तो मेरे को लगा मैं पूर्णतः I पागल हो गया was हूँ। sleeping on the floor, मैं जमीन पे सो जाता था, taking cold showers in England in the winter, ठंडे पानी में इंग्लैंड की सर्दियों में नहाता just था। cooking myself because they were not vegetarian, they were meat eaters, of course. Cooking all my own food. मैं अपने लिए खुद खाना बनाता था क्योंकि बाकी सब लोग मांसाहार करते थे। Putting funny pictures in my room. मैंने अपने रूम में कृष्ण Not की watching the television तस्वीरें anymore. लगाई थी। Not going to the football match anymore. फुटबॉल मैच ना देखना, टीवी देखना बंद कर दिया मैंने। Not going to the cricket match anymore. क्रिकेट मैच देखने बंद कर दिया मैंने। I didn't play cricket, but anyway, मैं क्रिकेट खेलता भी नहीं था। you do. So I didn't go to the football match. Not going out with my mates. Nothing anymore. अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना This सब कुछ guy's बंद कर gone दिया। crazy. सबको लगता था पागल हो गया हूँ। Couldn't understand it. After about three months, I told my mother and father, I've decided I'm going to join the Hare Krishna temple in 3 months' time. तो मैंने अपने माता और पिता को कहा कि मैं 3 महीने में हरे कृष्णा मंदिर में जाने वाला हूँ। And I did. और मैं गया। And that was that. Hare Krishna. They completely freaked out. If you know what that word, freak out, you know what that means? वह बहुत घबरा गए, पूरी तरह घबरा गए When I joined. जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया। But I didn't stop. परंतु मैं रुका नहीं। I don't know if that's humility or not, but it was determination anyway. मेरे को पता नहीं इसको विनम्रता कहेंगे कि नहीं, परंतु ये दृढ़ता है। Small that it may have been. And Hare Krishna, we're here today. और आज मैं यहाँ पर हूँ। All by mercy. We're only here by mercy.
मैं सिर्फ यहाँ We पे have to हम यहाँ पे realize कृपा that. से हैं. We can be gone in a moment. It's all by mercy, and we have to realize that only Krishna's mercy can protect us and does protect us. हम यहाँ पे सिर्फ कृपा से हैं. हम किसी भी क्षण यहाँ से भागे जा सकते हैं. हम सिर्फ कृष्ण की कृपा ही हमारी रक्षा कर रही है. Everything that exists is a form of Krishna's mercy. Everything. जो जिस भी चीज का अस्तित्व है वह केवल कृष्ण की कृपा से ही And है. when we see it in relationship with Krishna, that's humble. और जब हम चीजों को कृष्ण से Not संबंधित that देखते I हैं, did it or material nature did it or whatever it did. Nobody did it. No, humility is to recognize that everything is coming from Krishna and is meant to be used for Krishna's pleasure. वह विनम्रता है. ऐसा नहीं कि मैंने किया, इसने किया, भौतिक प्रकृति ने किया. नहीं, सब कुछ कृष्ण ने किया. यह जब हम देखते हैं तो वह विनम्रता है. That is what we're here to learn. यही हम यहाँ पे सीखने आए हैं. Papa ki jai, Gaur Premanandi, Hari Bol, Hare Krishna. His Holiness Jananand Goswami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi. Anger was because somebody meant to be clever, not doing so. I remember the call from morning after the construction site. It's almost वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतां
पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां साधन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare